आवाज़ आ रही थी क्या पहले? सो वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू all of you and welcome to current session, and we'll be doing top 50 MCQs on RBI flagship circulars. I thought starting with flagship circulars will be much more better so as to at least complete all these things. ठीक है, बाद में बाकी सारी चीज़ें तो हर कोई कर ही रहा है. फ्लैगशिप सर्कुलर से अगर कुछ मेन टॉपिक्स हम लोग पहले से निपटा के चले, सो दैट विल बी मच मोर एफिशिएंट एंड विल बी हैविंग मच मोर एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, है ना? अभी तो आवाज़ आ रही होगी सबको, आई गेस, एंड screen is also clearly visible, है ना? So some basic things. So the session will not be like कि just I will be showing you questions and I will be asking you for answers. ठीक है, कुछ बीच में अगर कुछ concepts मिलेंगे तो we will be discussing about it. Okay, और in the end अगर आपको कोई concept के regarding doubt है या anyways कोई भी doubt है, session के end में पूछ लेना, ठीक है? और session का at least marking scheme वही same रखते हैं. Just please maintain this कि correct कितना है, incorrect कितना है, how many have you skipped. And lastly, do tell me how much you got correct, how much incorrect, and do tell me the marks. And for all those of you who are seeing this not live, ठीक है, वो सारे comment में डाल देना जितना भी marks आ रहा है. So as to just have a bit of an understanding कि how everybody is faring, so as to you get to gauge what's the competition is right now, और फिर उस हिसाब से आप अपने preparation को mold कर सको, ठीक है? चलो, now let's move on to questions. So the first question is with respect to credit facility to minority communities. Okay, so we will be discussing about that Government of India has provided a list of 121 minority concentration districts in the country. Okay, having at least what percentage of minority population is the criteria behind that? These are your options. What do you think is the correct answer? While providing credit to minority communities, you have to identify the criteria for minority districts only. तो वो criteria क्या है? Rohit is saying E. Okay, what about others? Nitin is skipping. Aditi is skipping. हर कोई skip कर रहा है. 4 लोगों ने skip बोला है, 5 skip. Anybody wants to take an educated guess? Marco is saying 25%. Okay, what about others? See, for those of you who have skipped, no issues, but the criteria is 25% only. ठीक है? That while you identify minority districts, तो उसमें basically कम से कम 25% minority population होनी चाहिए, so as to provide them credit facilities, as you have made policies with respect to credit facilities to minority communities, and this is on the basis of religious minority. Okay. ठीक है, just remember this 25% criteria and 121 minority concentration districts. Next is, and this is very simple, everybody should attempt this as per RBI circular on credit facility to minority communities. How many minority communities do we have in this country, especially religious minority communities? ये सब तो आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो. Rohit, Aditi, Manav is saying 6. There are 33 people over here. Where are 30 people? Are all of you skipping this question? Yes, correct.
हाँ ठीक है. Yes, 6 minority communities are there. If I ask you the names in terms of religious minority communities, Muslims 6, Christians, Zoroastrians, Buddhists as well as Jains. ठीक है. This is as per RBI circular. Next is with respect to priority sector lending target, but especially in context of minority communities. We've discussed that overall we have target like 40% in normal bank scenario, but 75% in other specialized bank like UCBs. But we also have sub targets within. ठीक है, एग्रीकल्चर का अलग है, हर एक अलग इंडिविजुअल टारगेट, sectors that are there within the priority sectors उनका individual target है. So if you look at the sub target of the minority sector or the weaker sections overall, ठीक है, उसी के अंदर minority communities आती हैं, तो weaker sections का sub target कितना है under priority sector lending? Sub target का concept तो I hope everyone understands. So Kishan is saying C, 12%. Okay. Anushka is saying 10. Aditi is saying A. Rest, all of you are skipping this question, I hope. बाकी सारे skip कर रहे हो. Okay, the correct answer is 12%. C. अब देखो ये PSL में जो सब टारगेट्स हैं, you do not need circular रीडिंग फॉर सच टाइप ऑफ थिंग. आप लोगों ने PSL चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन योर स्टैटिक, एंड व्हेन यू रीड फाइनेंशियल इंक्लूजन चैप्टर विद इन योर स्टैटिक नोट्स, यू हैव द सर्कुलर डिटेल्स ऑन PSL. ठीक है, वो सारी डिटेल्स रहती हैं उसमें. आपका ओवरऑल टारगेट PSL का रहता है, सब टारगेट्स भी रहते हैं. अगर आपने वो पढ़ा होता तो ईजिली यू कुड हैव डन वीकर सेक्शन 1 टारगेट. ठीक है, तो मेक श्योर everyone not only attempt these questions but also write the topics that you need to study right now, which are at least based on your syllabus. Circular नहीं तो कम से कम syllabus में जो चीज़ें हैं उनको तो निपटा के रखें. And a lot of questions have come previously in the examination related to sub targets of PSL, and it's important for not only RBI but also for NABARD as well. So make sure you complete this topic, PSL norms as well as subsector norms. Next is Ministry of Rural Development. Government of India launched a new program called Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana. Obviously, it's an old scheme. Okay, but even old schemes have been asked in the question, and there are various circulars related to schemes as well. Okay, तो हम लोग schemes भी cover करेंगे, at least the flagship schemes. But at least try to do this question. Integrated, which of the following is not a scheme which has been integrated into Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana? So Rohit is saying 4th E. Marcos is also saying E. Maharishi is saying food for work program. What about others? Skipping. Kishan saying E. Yes. So all of those who are saying E are correct. Food for work program is not associated with स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे, if you look at the solution, it's important that at least you have an understanding of what are the various schemes that comes under Swarojgar Yojana. These schemes have been integrated into Swarna Jayanti Gram Swarojgar Yojana. Integrated rural development, training of rural youth for self-employment, TRISEM, development of women and children in rural areas, supply of improved toolkits, Sitra, Ganga Kalyan Yojana, as well as Million Wells Scheme. Next, an easy question. I hope everybody is doing schemes for ESI purposes.
So NRLM was renamed as DAY, Deen Dayal Antyodaya Yojana, NRLM, with effect from Yes, all of you are correct. The correct answer is D, 2016. Next is women SHGs under DAY NRLM consist of 10 to 20 members. But in case of groups in the difficult areas, group with disabled persons, even tribal regions, what do you think is the minimum number of members that is required for making a particular self-help group? ये सबको पता होना चाहिए. आप सब लोग ने NRLM तो पढ़ी हुई है, ठीक है. NRLM का रिविजन भी ऑलरेडी हो चुका है. I hope you guys should be able to do this question. What's the minimum number of members, especially in context of self-help group in various difficult areas? Yes, the correct answer is B, 5. ठीक है. Next is Ministry of Rural Development under NRLM scheme provides revolving fund to strengthen the institutional capabilities of a self-help group. So what's the maximum amount is provided under NRLM in context of revolving fund? What's the correct answer? 7th, everyone should be able to do this. The question asks you about maximum. Yes, the correct answer is E, because as all of you know, the range is 20k to 30k. Provided 30. अब इसमें important चीज क्या है? What do you understand by revolving fund? Everyone, what is revolving fund? मतलब revolving fund का primary purpose क्या होता है? Is it like a working capital loan, or is it like a loan towards term loan? है क्या चीज revolving fund? As I said कि MCQs नहीं, we'll be discussing some important concepts also. It's not only for emergency purposes. No, not working capital. If you look at the circular, okay, अगर आप circular देखोगे, revolving fund is provided to SHG for building their Panch Sutras task. Basically Panch Sutra task में क्या करते हैं ये लोग? Regular lending, regular maintenance, regular repayment वगैरह वगैरह. ठीक है. अगर आप assume करें आप ट्राइबल एरिया के किसी 5 मेंबर के SHG को बोल रहे हो कि आप SHG बना लो, उनको समझ में नहीं आता कि SHG क्या है. ठीक है, चलो बना भी लिया, चलो हम 5 लोग बैठ के इकट्ठे हो जाते हैं. अब क्या करें? ठीक है, अब हमारे पास तो पैसा है नहीं, तो चालू कैसे करें? बैंक के पास जाएंगे, बैंक बोलेगी कि आपके पास ना तो पैसा है ना आपके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री है. तो वो जो इनिशियल क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड इनिशियल कैपिटल विच इज कॉल्ड रिवॉल्विंग फंड. So the government will provide you, let's say 25k, which comes under the range of 20 to 30k. तो 25k एक ट्राइबल SHG को प्रोवाइड करा दिया. Now what the tribal SHG will do? They will give this money for internal lending to the members only. ठीक है, तो उनको मान लीजिए सीड के लिए इस 25k में से उस SHG ने दे दिया. ठीक है, फिर वो जिस मेंबर ने लिया उसने ये पैसा लौटा के सेम रिवॉल्विंग फंड में इंटरेस्ट के साथ दे दिया. सो द सेम 25k विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व. लोन दिया, इंटरेस्ट के साथ वापस, लोन दिया, इंटरेस्ट के साथ वापस. एंड दिस विल नॉट ओनली हैव बिगर कॉर्पस बट इट विल ऑल्सो जनरेट अ क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, so that banks can now see that whether the banks can really attest because they have all these maintenance of accounts. तो ये लोग पंचसूत्र फॉलो कर रहे हैं, पंचसूत्र फॉलो कर रहे हैं, तो दे विल बी हैविंग
मच मोर लेट्स से ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लोन, और फिर उनको बड़ा कोई लोन दे सकते हैं बिकॉज नाउ दे हैव अ वेरी गुड क्रेडिट हिस्ट्री. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्विंग फंड. ठीक है, सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो, now let's move on to next question. With reference to self-help groups, which of the following is not known as Panch Sutras? Regular meetings, regular savings, internal lending, timely payment, regular trading. Adirat saying training. Rohit also saying training. E. What about others? Proper maintenance of book accounts. Proper maintenance of book accounts तो important factor है. How can you say this is not a Panch Sutras? Yes, the correct answer is regular training, because this does not get included in the concept of Panch Sutras, because Panch Sutras includes regular meetings, regular savings, internal lending, timely repayment, as well as maintenance of account recoveries. Yes, Rohit, correct. Fifth is the maintenance of account recoveries. ठीक है? Next is under interest subvention scheme on credit to women SHG during the year 23-24. Okay, for loans above 3 lakh and up to 5 lakh under the scheme, banks will extend credit at the interest rate equivalent to their 1-year MCLR or any other benchmark based lending rate, or what % per annum? Now you must be wondering, we are discussing about the 23-24 because the latest RBI circular with respect to NRLM hasn't been arrived, so I haven't changed the date, the question. Okay, so that's why we are doing the previous one. तो जब तक नया नहीं आ रहा तो हम लोग ये करते हैं, नया आएगा तो we'll be discussing about that. So tell me, for the loans between 3 to 5 lakhs, what's the interest rate? Rohit says D, Shashidhar says D, Kishan says D, Nitin says C. What about others? हाँ आ जाएगा नया, because this also came around 26th April. पिछले साल 26 अप्रैल को आया था ये वाला सर्किल, तो इस साल भी आ सकता है. Yes, the correct answer is 10%. ठीक है? Let's move on to the next, which is under the interest subvention scheme on credit to women SHGs during the year 23-24, which of the following bank had been nominated as the nodal bank for implementation of interest subvention? अब ये देखो, जितनी भी चीजें आपको सवाल पूछी जा रही हैं, these things are important. You will be asked about not only the factual details but also details like what will be the bank that will be nominated in context of implementation of this. So 10th, Sashidhar saying E, Kishan also saying E, Manik also saying E, Aditi saying E, Nitin skipping. Yes, the correct answer is E only. Indian Bank is the correct answer. Okay. Next is under NRLM for loans to self-help groups up to how much amount that no collateral, no margin is required. किसी भी चीज की requirement नहीं है. What's the amount that is required? Or what's the amount up to which nothing is required? Everyone? 11th. So D. Yes, correct. ठीक है, up to 10 lakhs. NRLM is not only the one of the most important flagship scheme. अगर RBI का सर्कुलर आता है तो फिर वो और इम्पोर्टेंट हो जाती है. ठीक है, तो RBI का सर्कुलर जब भी NRLM पे आएगा, ठीक है, it is our duty, responsibility, whatever you call it, कि हर एक फैक्चुअल डिटेल्स, हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि
इट्स अ इजी, मतलब बेसिकली बोल रहे हैं कि आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस, तो बेटर है कि हम कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें, है ना. नेक्स्ट इज under NRLM in order to facilitate use of loans for augmenting livelihood of SHG members. ठीक है. अब 3 टाइप के लोन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल लोन्स अबव 1 लाख, for loans above 4 lakhs and for loans above 6 lakh. What percentage of those amount of loans should be primarily used for income generating activities? Twelfth, everyone. Rohit Singh E. What about others? पचास, 75, 85. ये फ्लैगशिप सर्कुलर्स है नितिन. रीसेंट तो आपको थोड़े मिलेंगे, रीसेंट तो अभी आएगा तब मिलेगा. Yes, the correct answer is 50, 75, 85%. Next question related to scheme, which is credit enhancement guarantee scheme for scheduled caste under Ministry of Social Justice and Empowerment. Okay, under this scheme, I am asking you which of this following statement is not true. Okay, so the scheme was launched in 2015. To provide credit enhancement guarantee for member lending institutions which extend financial assistance to these entrepreneurs. IFSCA Limited has been designated as a nodal agency. Individual SC entrepreneurs are the eligible people. The amount of guaranteed cover under CEGSSC ranges from minimum of 0.15 CR to maximum of 10 CR. The tenure of the guarantee shall be maximum up to 7 years. So what do you think is the correct answer? 13th, everyone. Aditi is saying D, Nitin saying up to 5 CR. Yes, the correct answer is D only, because the limit is up to not 10 CR but 5 CR. Similarly, differential rate of interest scheme for weaker sections providing short-term loans for weaker sections. Which of the following is not true regarding DRI scheme? Under the DRI scheme, bank provide finance up to 15,000. In order to ensure that person belongs to SC/ST, banks have been advised to grant eligible borrowers belonging to SC/ST such advances of not less than 2/5 of total DRI. Eligibility criteria: size of land holding should not exceed 1 acre of irrigated land. Membership of SC/ST satisfying the income criteria can also avail housing loan up to 50,000. The concessional rate of interest is 4% per annum. What do you think is the correct answer? Fourteenth, everybody. Rohit says D. Rashida also says D. बाकी सबको हवा नहीं लग रही, because these are old circulars. ठीक है, आप लोगों को लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स की लिस्ट मिली होगी आई गेस. हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी हैव दैट लिस्ट? है ना. तो वो इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स आपको इसीलिए बोला है क्योंकि उसके सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बिकॉज दीज आर टाइमलेस सर्कुलर्स. और कुछ नहीं, आप लोग उसको पढ़ लोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या लगता है ये अप्रैल में अचानक से माता कैसे आ गई आरबीआई को इतने सारे सर्कुलर्स निकाल दिए? बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशन, ट्रीटेड लाइक अ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ आरबीआई, बिकॉज आरबीआई हर साल उसको
साल भर के लिए बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस होते हैं उसके रिगार्डिंग सर्कुलर्स निकालने होते हैं, और उन सर्कुलर्स को अगर आप देखोगे तो उसमें 2023-24 में जो जो चेंजेस हुए रिगार्डिंग टू दीज सर्कुलर्स, ऑल ऑफ दीज सर्कुलर्स आर अपडेटेड एंड प्रोवाइडेड टू यू। 23-24 फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए आरबीआई ने उस सर्कुलर के रिगार्डिंग कोई चेंज किया होगा, ठीक है, तो फिर 1 अप्रैल को वो क्या करते हैं, वो सारे चेंजेस मिला के सामने आपके सामने रख देते हैं, पूरा एग्रीगेटेड, कंसोलिडेटेड, इंक्लूडिंग ऑल द चेंजेस अप टू दिस डेट। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ माता वाता आ गई हो, ये इनका हर साल का ही काम है। तो अगर आप वो पढ़ लोगे सर्कुलर तो दिस विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट ईयर एज वेल, क्योंकि अप्रैल में ये सारे सर्कुलर आ रहे हैं, और फिर ऑल दीज सर्कुलर्स आर फॉर वेरियस रेगुलेशंस फॉर द होल ईयर। ठीक है, and the correct answer for 14th is D only, because 50,000 is not the amount, it's 20,000 only. Next, no loan related and ad hoc service charges, inspection charges should be levied on priority sector loans up to how much amount? Fifteenth, everyone. Skip. The correct answer is A only, 25,000. Next, अब ये तो आप सब लोग बताइए, क्योंकि these are basic concepts that we will be dealing with here. Which of the following is not an example of non-performing asset? अगर आप जो एसेट क्लासिफिकेशन वाला सर्कुलर अगर आपने देखा होगा तो उस सर्कुलर में दे टेल यू द डेफिनेशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एनपीए। ओके, सो इन दोज डेफिनेशन देयर इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। यार किसी को पता है, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑल्सो, तो आप लोग एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। देन वी हैव द बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days. द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट remains overdue for 3 crop seasons for short duration crops. The installment of principal of interest remains overdue for 1 crop season for long duration crops. The outstanding balance in the cash credit account remains in excess of the sanctioned limit for 90 days. What do you think is the correct answer? हमने पूछा है कि not an example, आप वो मत बताइए, ठीक है? What's the correct answer for 16th, everyone? Nitin says C, Adirath also says C, Rahul also says C, correct. Yes, all of you are correct. The correct answer is C only, because this is not for 3 months but for 2 crop seasons. ठीक है, अभी हम लोग जब अप्रैल के थोड़े बहुत सर्कुलर करेंगे, स्पेशली द एसेट क्लासिफिकेशन एज वेल एज द एनपीए सर्कुलर, वी विल बी डीलिंग विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, तो डोंट वरी, एक बार रिविजन यहाँ हो गया, एक बार रिविजन क्लास में हो जाएगा। Next is a substandard asset would be the one which has remained NPA for a period of how many days? 17th, everyone. Basic things are these. Adirath says B, B, C, B, B. Correct. What else? Yes, all of you are correct. The correct answer is B only, less than or equal to 12 months. Next, as per RBI guidelines, principal or interest payment for any or other amount wholly or partly overdue between how many days can be mentioned as special mention account 1? 18th, everyone. We have these guidelines called special mention account 0, 1, 2. Then NPA.
Yes, the correct answer is E only, more than 30 days and up to 60 days. तो बेसिकली अगर आप इसका सोल्यूशन देखोगे 18 था ना ये. As you can see, and if you look at even the latest circular as well, तो उसमें भी यही सेम डिटेल्स है, चेंज नहीं हुए. तो यू कैन सेफली लर्न दिस. स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 अप टू 30 डेज, अगर ओवर ड्यू है तो 1 30 to 60, 2 60 to 90, और 90 के बाद क्या हो गया? 90 के बाद तो एनपीए हो गया. नेक्स्ट, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस ऑन कोलैटरल फ्री लोन्स irrespective of end use and mode of application provided to low income households. Household having income of less than 3 lakh rupees shall be considered as microfinance loans. ठीक है, अब microfinance loans के context में the monthly installment of such loan shall be subject to a limit of maximum how much amount of monthly household income. Household income की कितने percentage का maximum is the limit, which is A 50%, A guess. Adirat also says A. What about others? Nevertheless, the correct answer is A only. 50% is the लिमिट. कि मतलब उनकी सैलरी अगर मंथली 15,000 है तो 7,500 से ज़्यादा आपका माइक्रो फाइनेंस का इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए मंथली. ठीक है. नेक्स्ट इज एज पर आरबीआई गाइडलाइंस यूसीबीज कैटेगराइज्ड इन टियर 2 to tier 4 कैन एक्सटेंड इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स अप टू मैक्सिमम ऑफ हाउ मच अमाउंट पर इंडिविजुअल बोरोवर. अब ये तो सबको पता होना चाहिए बिकॉज एनीवेज सच टाइप ऑफ नॉर्म्स वी हैव डिस्कस्ड इन जनवरी सर्कुलर्स. तो 20th का सबको पता होना चाहिए. आप लोगों ने क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स जब पढ़ा था जनवरी के सर्कुलर में, वहां सब ये चीजें डिस्कस करी हुई थी. केवल 4 लोग ही थे क्या सर जनवरी सर्कुलर्स की क्लास में? अनदर थिंग, ठीक है, दिस मेक्स whoever is not able to answer this, please make sure that you revise January circulars at least. ठीक है, उसमें क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स होंगे, वहां पर ये सारी डिटेल्स हैं. एंड दिस इज विद इन द 6 months that you have these circulars, तो make sure you revise these things. Can't remember because you haven't revised it, please revise it. It's for your own benefit only. ठीक है. अब जिसको याद है एटलीस्ट वो बताओ कि 60 lakhs और 140 lakhs was the tier 1 and tier 2 to tier 4 limit 140 lakhs. Next is UCBs may extend need-based credit to a maximum of how much amount in metropolitan centers and how much amount in other centers for repair, addition, alteration, irrespective of whether house flat owner occupied or tenant occupied. Basically house maintenance के लिए कितना लोन maximum दे सकती है, especially in both type of case scenarios. In metro cities, what's the maximum limit, and in other cities, what's the maximum limit? So it says 21B, Aditi says D, others 33 बंदे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हो? टेक अ गेस. स्किप करने में कोई मज़ा नहीं है, यहाँ पे गलती कर लो, बट एटलीस्ट गलती से याद तो रहेगा कि क्या चीज़ गलत करी, क्या चीज़ सोचा, किस तरीके से अटेम्प्ट किया. ऑलवेज टेक एजुकेटेड गेस एटलीस्ट इन द क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट इन सेशंस में तो एजुकेटेड गेस ले सकते हो आप लोग.
फैक्ट्स में भी एजुकेटेड गेस हो सकता है। तभी मैं बोलता हूँ कि आपको जब भी कोई फैक्ट दिखे ना, इवन जैसे फॉरेक्स रिजर्व्स का फैक्ट दिख रहा है या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट का दिख रहा है, ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर द रेंज इन विच दे आर होवरिंग, क्योंकि अगर चेंज भी होगा तो 1-2% चेंज होगा। अगर उसके आसपास का कोई आपको फैक्ट मिल गया तो यू विल बी एबल टू मच बेटर हैव अ चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट करेक्ट इन द एग्जामिनेशन। अगर गेस करनी है कि मान लीजिए 30 क्वेश्चन कर रहे हो, 30 में से केवल 3 पक्के से आते हैं, फिर बाकी 27 नहीं आते हैं, तो ऐसा थोड़ा कि केवल 3 करके आओगे, अटेम्प्ट तो मारोगे ना। चलिए, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी ओनली, 10 lakh and 6 lakhs. Next is UCBs with deposits more than 100 crores to 1000 crores are categorized as, अब इससे आसान क्वेश्चन I cannot give you. Tier classification, हाँ एग्जैक्टली इतनी दूर से एग्जाम देने आए हो। अब यहाँ भले ही दूर नहीं आएगा, आप लोग मोबाइल की स्क्रीन में देख रहे हो या सिस्टम की स्क्रीन में देख रहे हो, बट अटेम्प्ट तो करो। Yes, the correct answer is tier 2. ये हो गया 100 करोड़ तक का, this 100 to 10,000, oh sorry 1000, ये हो गया 1000 to 10,000, और ये हो गया more than 10,000। और tier 5 क्या है? tier 5 कुछ है ही नहीं, only 4 tier classification is there। ठीक है, so please always remember this। Next is, as per Reserve Bank of India guidelines, UCBs shall have to achieve 75% target of priority sector lending up to what year or up to what financial year? Everyone, it should be an easy question. आप लोग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का चैप्टर अच्छे से कर लो, बहुत क्वेश्चंस आएंगे उसमें से, एक क्वेश्चन भी आपने गलत नहीं करना है, बिकॉज दिस इज सिंपल। सब चीज़ आपके नोट्स में लिखी हुई है, नोट्स में लिखी हुई चीज़ गलत करके आओगे तो फिर बहुत बुरा लगेगा। So, yes, Rohit saying C, Kishan also saying C, Rishabh saying C. Yes, all of you are correct. The correct answer is 25-26. Initially, it was 20 up to 31st March 2024, but this was extended by the Reserve Bank of India by 2 years. तो 2026 तक का है, ठीक है? Is the correct answer. Next is the aggregate value of its paid up capital and reserves requirement for cooperative bank to start banking business in India is what? आपको यूसीबी खोलनी है तो आपको पेड अप कैपिटल कितना रखना पड़ेगा? एवरीवन, yes, the correct answer is 1 lakh rupees only. Now we'll come to another critical aspect of financial inclusion. Which of the following was the initiator of self-help group concept? These are prominent economists. What do you think is the correct answer? 25, everyone. Yes, all of you are correct. Mohammad Yunus is the correct answer. Mohammad Yunus belonged to which country? Yes, correct. Bangladesh is the right answer. Okay. So let's move on to the next. So lead bank scheme was introduced by Reserve Bank of India in which year? Static question. Yes, the answer is correct, 1969. Under the lead bank scheme, which of the following statement you think is not correct or not true? Incorrect, we are asking. The lead district manager of the district is the chairman of the
BLBC, banking level, BLBC meetings are held at quarterly intervals. District Development manager of NABARD shall attend all meetings. Representative of Panchayat Samitis are also invited to attend all meetings. Lead District Officer of Reserve Bank of India selectively attends the BLBC meetings. So what do you think is the correct answer over here? Lead bank scheme, incorrect statement. Bishop says D, Aditi says D. Yes, all of you are correct. Representatives of Panchayat Samitis is the incorrect answer. Next, lead bank scheme. Who is the chairman of DCC meetings? DCCs being district consultative committees. The correct answer is district collector only. Next is under the lead bank scheme, which of the following is not true regarding DLRC meeting, district level, review committee meetings. So DLRC meetings are chaired by district collector. Public representatives are allowed. DLRC meetings should be convened at least once a year. May also have representative of state ministry. Office shall be responsible for convening these meetings. तो 29 का आंसर क्या है? देखो इस तरीके से क्वेश्चंस जब भी आते हैं, एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट लाइक अ थंब रूल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट यूजुअली हेल्प्स. मान लीजिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कोई स्कीम में बहुत सारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, हाई प्रोबेबिलिटी इज देयर कि अगर कोई फैक्चुअल डिटेल्स दिए जा रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ बताई जा रही है, ठीक है, जिसको चेंज करना आसान है, विच इज़ मच मोर डायरेक्ट, ठीक है, तो उसका इनकरेक्ट होना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टेटमेंट्स दैट आर जेनेरिक इन नेचर, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो दैट विल क्रिएट एम्बिग्विटी विद इन दैट ओनली. ठीक है, तो इस चीज़ को यूज़ करके आप कभी कभी एजुकेटेड गेस लगा सकते हो. ठीक है, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कम से कम कुछ तो सही. Yes, the correct answer is C, because it's quarterly, not once a year. ठीक है, now let's move on to the next. Under the lead bank scheme, which of the following is not true regarding state level bankers committee? So इसमें भी meetings are required to be held regularly at monthly intervals, chaired by chairman, chief minister, finance minister, may be invited to attend meetings. State level bankers committee constituted in April 1977. Responsibility for convening would be SLBC, convener, Bank of State. Again, use the same method, same thing. ठीक है, कि एजुकेटेड गेस मारने के लिए क्या गलत हो सकता है, क्या लगता है आपको? क्योंकि इस हिसाब से सोचोगे देन यू विल बी थिंकिंग अबाउट द हाउ द एग्जामिनर मेक्स क्वेश्चंस. इसमें भी आंसर क्वार्टरली है. देखो पढ़ाई तो करनी ही है, दैट्स द मोस्ट प्राइमरी थिंग. वो कंप्लीट करने के बाद फिर MCQ सॉल्व करने हैं, बिकॉज दिस गिव्स यू अ नैक ऑफ सॉल्विंग वेरियस MCQs. नेक्स्ट, एज पर RBI गाइडलाइंस, द सेंटर्स विच हैव व्हाट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन दैट दे आर कंसिडर्ड एज Tier 4 सेंटर्स? everyone. तो 2011 का बेसिक क्राइटेरिया है. ठीक है, वो सब आप एनीवेज रट ही लेना, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज 10,000 to 19,999. सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए अर्बन सेंटर्स का डेफिनेशन क्या है एज पर 2011 सेंसस, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? $32. Yes, from 1 lakh to
9,99,999. नेक्स्ट इज एज ऑन मार्च 31st. अब ये देखो इसमें चेंज आया था तो आई हैव इंक्लूडेड द चेंज ओवर हियर. एज ऑन मार्च 31st 2024, 12 public sector banks and 2 private sector bank have been assigned lead bank responsibility in how many districts of the country. अब इसमें देखो पहले in 2023 circular 12 public sector banks and 1 private bank was there, but a new private bank has been included. उसकी बात कर लेंगे हम लोग, but at least tell me in how many districts the lead bank scheme is being implemented. ये जिसने अभी पढ़ा होगा तो उसी को पता होगा. What do you think is the correct answer? Take a guess. Even if you know, you don't know. सभी को पता है. Correct. Well done. Correct answer is 779 districts. बहुत बढ़िया. So as on March 31st, 2 private sector bank have been included. Which one of the following is the private sector bank that is there in the responsibility of lead bank? $33 everyone. The correct answer is J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक. ठीक है, ये पहले से थी, अभी जो लेटेस्ट ऐड हुई है वो ICICI बैंक. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी. Okay, and these have been advised to review the presence of banking outlets of various banks, that they should be within a what kilometer radius of 500 households in hilly areas. Yes, the correct answer is 5 kilometers. Next, as per RBI guidelines, bank have been advised to achieve a CD ratio of what percentage in respect of their rural and semi-urban branches separately on an all India basis. Credit deposit ratio. Credit deposit ratio कितना होना चाहिए as per RBI guidelines, especially in rural and semi-urban areas, branches? It says D. What about others? Others skipping this question? So whoever is saying D is the correct answer. ठीक है, 60% is the credit deposit ratio that they want. Next is at least 25% of the total number of banking outlets opened during a financial year must be open in an unbanked rural center. Of what type of? What type of centers? Tier 1, 2, 3, 4. The correct answer is C only. Tier 5, Tier 6. Again, the banking outlet, if you see the definition of it, is a fixed point service delivery unit manned by either bank staff or business correspondent, where services of acceptance of deposits, encashment, or lending of money are provided for a minimum of how many hours per day for at least 5 days a week. अगर आप बैंकिंग आउटलेट खोल रहे हो तो बैंकिंग आउटलेट में कितना घंटे सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी? The correct answer is 4 hours only. Again, banks are advised to provide minimum overdraft facility of how much amount to every women SHG member having PMJDY account. This is as per NRLM guidelines April 2023. नई वाली आएगी तब देखेंगे, but at least
As per April 2023, what's the guidelines with respect to overdraft facility? Rohit says C. Manik also says C. Aditi says B, 2000, okay. Anushka says C. The correct answer is C only. ठीक है, 5000 is the overdraft facility provided in context of that. Next, under NRLM, in case of term loan to self-help group, banks are advised to sanction loans in doses. What's the first dose as per NRLM circular? $38, everyone. Rohit says A, Krishnan says also A, rest all, I guess. Are you skipping this question? Correct answer is A only. देखो ये सब चीज़ें NRLM के सर्कुलर में है. NRLM का सर्कुलर आप लोग एटलीस्ट एक बार देख लो अपने एंड से, ठीक है. Obviously I will be taking about this, I will be discussing about this circular whenever it will be coming in April only, ठीक है. तो अप्रैल का जो लास्ट वाला लेक्चर होगा अपना, अगर 26 अप्रैल जैसे लास्ट ईयर आया था, इस साल भी अगर उसी टाइम पे आता तो वी विल बी डिस्कसिंग इट ओवर देयर, डोंट वरी. नेक्स्ट इज इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस और एंटरप्राइजेस व्हिच कैन नॉट गेट रजिस्टर्ड ऑन द व्हाट पोर्टल ड्यू टू लैक ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स सच एज पैन और जीएसटी. ये तो आप सबको पता ही होगा. The correct answer is A only, Udyam registration portal. ठीक है. Next is, as per Basel III capital regulations, CRAR requirement for commercial bank is how much? है ना, ये सबको पता है. Very good, 9%. As per report on currency and finance for the year 22-23, India's green financing requirement is estimated to be at least what percentage of GDP annually till 2030? देखो करेंसी फाइनेंस की रिपोर्ट मई में आई थी लास्ट ईयर, फिर दोबारा आएगी, तो जब आएगी तब देखेंगे, बट एटलीस्ट जब तक नहीं आई है तब तक ग्रीन डिपॉजिट्स का रिपोर्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट. सो व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस? 41. Rohit says 2.5%. Kishan also says A. Ashutosh says 2.5. Yes, all of you are correct. The correct answer is 2.5% only. And this is a target with respect to 2030. So anyways, it's important. है ना? चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे इस साल का हो. Which of the following is not true regarding sovereign green bonds? That the bonds will be issued for an aggregate amount of 60,000 crores in 23-24. 5% of the notified amount of sale will be reserved for retail investors, will be reckoned as eligible investor for SLR purposes, eligible for trading in secondary market, will be designated as specified securities under fully accessible route for investment in government securities. 42nd, what's the correct answer, everyone? Take a guess at least. मतलब लॉजिकली सोचो ना, ये क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या क्या अभी चीजें प्रोवाइड करा रखी है? क्या आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो इसको हटाओ, ठीक है. एट द एंड ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट वांट्स देम टू गेट इन्वेस्टेड इन, तो ये भी करेक्ट है, इसको भी हटाओ. एट द एंड इट्स अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सो व्हाई विल नॉट इट बी SLR
जिसके अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो इसको भी हटाओ, तो बचा ये दोनों, 50-50 का एक गेस ले लीजिए। ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शंस। अब ये यूपीएससी तो बन नहीं गया है कि ओनली 1 ओनली 2 वाला सिस्टम यहाँ पे आ गया। यहाँ पर जब तक ऐसे सिस्टम्स हैं, टेक एन एजुकेटेड गेस, एलिमिनेट ऑप्शंस, ट्राई टू go for the correct answer. The correct answer here is A, because it's not 60,000 crores, it's 16,000 crores. Next, which of the following does not include 5 nectar elements? Basically, पंचामृत में से in the below options पंचामृत वाला कौन सा नहीं है? Which does not belong to Panchamrit as given by the government. (43) everyone. Yes, correct. The correct answer is 50%. और ये तो सबको पता होना चाहिए, because in sustainable development we've anyways done it. ESI में सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर में भी कर रखा हम लोगों ने। Another thing, the India's commitment to preserve environment is enshrined in article what of the constitution? पहली बात तो ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है, which is part 4 of the constitution, isn't it? जिसका एटलीस्ट थोड़ा बहुत सिविल्स का बैकग्राउंड है, एटलीस्ट दे शुड अटेम्प्ट ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स पढ़ के तो प्री निकलता है, कैसे निकलेगा वो? यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। 48A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमिटी? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमिटी, is chaired by cabinet secretary, will meet at least twice a year. For every successive year they will meet to identify a fresh set of eligible expenditure, and all of the above statements are correct. What do you think is the correct answer? 45 everyone. C, B, E, C, चलो थोड़ी डाइवर्सिटी मिली, नाइस। द करेक्ट आंसर इज बी ओनली। इट विल नॉट बी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी, इंस्टेड सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स, सॉरी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडेड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, minimum leverage ratio shall be how much for banks other than domestically systematic important banks? ठीक है, DSIBs की नहीं पूछ रहे हैं, उनके अलावा जितने भी बैंक्स हैं उनका लेवरेज रेशियो क्या होना चाहिए? Yes, for SIB it is 4%. And for other than SIB, the correct answer is 3.5%. Next, as per RBI guidelines, Tier 1 UCB operating in a single district shall have minimum net worth of 2 crores, and other UCBs shall have a minimum net worth of Tier 2 to Tier 4. उनका net worth कितना होना चाहिए? एवरीवन, ये तो बेसिक स्टैटिक क्वेश्चन है। जस्ट लाइक हाउ यू नो टीयर 1, 2, 3, 4 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वो 10,000 करोड़ वाला आपको पता है, इस हिसाब से ये भी पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज यस, अप टू क्वेश्चन नंबर क्या है? 47. A is the correct answer, 5 CR. Next, as per RBI guidelines, Tier 2 to 4 UCBs shall maintain a minimum CRAR of how much?
यूसीबीज के लिए कितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है? बारह % is the correct answer. 12%. And this is also on the basis of latest UCB circular also, जो अभी मार्च में आ भी चुका है. ठीक है, I've cross checked it. Next is the limit of ways and means advances for the first half of financial year 24-25 of Government of India. ये तो सबको पता होना चाहिए. अभी just मार्च के सर्कुलर में हम लोगों ने डिस्कस किया. What's the correct answer? Everyone should answer this. $49th. Yes, 1.5 lakh crore. ठीक है. So before going to next question, tell me what's the interest rate levied on such type of ways and means advances? और अगर ओवरड्राफ्ट हो गया तो ओवरड्राफ्ट पे कितना लगेगा? यस, रेपो प्लस 2%. एंड व्हेन गवर्नमेंट रीच व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस अमाउंट, देन आरबीआई हैज टू रिकमेंड कि आप ना एक नए सिक्योरिटी इशू करो, तभी पैसा उठाओ. अब वेज एंड मीन से मत उठाओ. कितने % यूसेज पर? यस मानिक करेक्ट. यस रोहित करेक्ट. Mr. Inflation is also correct. I hope Mr. Inflation do not gets too much high. Yes, 75%. ठीक है. Next is RBI released a branch authorization policy for urban cooperative banks. Under that policy, the eligible UCBs are permitted to open new branches up to what percentage of the total number of full-fledged branches at the end of previous financial year? उनके पास जितने ब्रांचेस हैं उसके कितने % तक they are allowed to open branches? Take a guess at least. आखिरी क्वेश्चन है, कुछ नहीं तो -0.25 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा? What do you think is the correct answer, everyone? Prashant says D, Aditi says D, everyone saying D. So how could I say that D is not the correct answer? D is the correct answer. ठीक है? So this is all from my side today. Now, how many of you guys got how many correct? I guess this session was not like earlier session, जो आप सब लोगों ने पढ़ भी रखा था, रिवाइज भी कर रखा था, क्वेश्चंस आपको पहले मिल भी चुके थे, तो नंबर पिछली बार तो बड़े अच्छे आए थे. इस बार कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं आप सबके? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ठीक है, नंबर डज नॉट मैटर राइट नाउ, नॉट एट ऑल. ठीक है, व्हाट मैटर्स इज कि आपको एटलीस्ट पता लग गया कि कौन कौन से सर्कुलर आपने देखने हैं. Go to the list of important schemes, go to the list of important circulars. ठीक है, go to the relevant topics in your syllabus. वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा और सब कवर्ड हो रखा है. एटलीस्ट अपने नोट्स तो कवर कर लो जो मेंशन सिलेबस में हो रखा है. सर्कुलर्स लाइक NRLM, एटलीस्ट आप सब लोग इस चीज़ को तो देख ही लो. सर्कुलर ऑन PSL, आज कम से कम ये 2 सर्कुलर कर लो. दिस विल हेल्प यू इनएविटेबली इन द phase 1 as well as phase 2 examination.
Nancy, I guess this will be uploaded in most important MCQs. वहाँ पर होंगे. Adirat is asking what? RBI circular, budget, flagship scheme, current affairs, इनमें से वेटेज प्रायोरिटी किसको सबसे ज़्यादा दें? देखो यार, ये सारी चीज़ों से ही क्वेश्चन बनते हैं. अगर इन सब में से किसी एक को हटाओगे तो वो वेटेज ही खा जाएगा. थिंक अबाउट इट लाइक जैसे ब्रिक्स में नहीं है, हर मेंबरशिप को 20% का वो है वोटिंग पावर, इक्वल वोटिंग पावर. सो ऑल द थिंग्स दैट यू हैव मेंशनड ओवर है ना, सबको इक्वल वोटिंग पावर है, तो सबको लेके चलना पड़ेगा, किसी एक को प्रायोरिटी नहीं. जस्ट टेक, ठीक है, साइमल्टेनियसली 2-2, 3-3 अगर कर सको तो करके चलो. Anything else if you want to ask, please ask, otherwise we'll wind up the session. हाँ रोहित, उसका लेंगे हम लोग, ठीक है, डोंट वरी, व्हेन द नोटिफिकेशन विल कम, फिर यही सारे सेशंस लेने हैं. रिपोर्ट का ऑलरेडी वी हैव दिस 1 डॉक्यूमेंट, उसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट रहेगा दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस. तो वो 2 डॉक्यूमेंट का लेक्चर आई विल ऑल्सो टेक, और उसके बाद रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग एक MCQ सेशन बिफोर फेज़ 1 और आफ्टर फेज़ 1. दिस विल बी एटलीस्ट रिपोर्ट का एजेंडा ये रहेगा. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. ठीक है, आप लोग ज्वाइन करते हो, आप लोग आंसर्स करते हो, दैट मेक्स द सेशन फ्रूटफुल. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. चलो, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन कीप रिवाइजिंग. एटलीस्ट ऑल ऑफ यू शुड रिवाइज दीज 2 सर्कुलर्स टुडे ओनली. इसको निपटा के साइड कर दो. ठीक है, थैंक यू.